हाइड्रोजन वाइज है। हाँ वो की हुई। हाँ हाँ की हुई है वो। In the first lecture, we have just seen or we just revised the basic concepts of or fundamentals of engineering mechanics. Uh, Today, we are going to formally start the numerical problems of stresses in any section. To begin with the stresses, the first step is to determine the internal forces. Stress kya thi? What we learned from the last lecture was stress is force per unit area, or this is the intensity of force. We have seen two main types of forces, normal forces and shear forces. So normal force is any force that is acting perpendicular to the plane of the body, perpendicular to the section passing through the body, and the stress related to normal force will be referred to as normal stress. So normal stress is force perpendicular, acting perpendicular to the plane of the body divided by its cross-sectional area or perpendicular area. So कोई भी आपके पास मेंबर है उसकी आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड पता है, उसका क्रॉस सेक्शन जिस पे वो फोर्स एक्ट कर रही है, देन यू कैन फाइंड आउट द स्ट्रेस एक्टिंग इन दैट मेंबर. So the first step in analysis of any structural member is to determine internal forces. If you have any member, you will simply pass a section through it. Let's call it AA section. You will see what is happening inside, how many forces. This is normal force that is acting perpendicular to the plane. This is shear force acting parallel to the plane. So any force, normal force divided by its perpendicular area is normal stress, defined by the or symbolic represented as sigma. So this is normal force divided by perpendicular area. So we are going to calculate these stresses. The first step in an analysis will be the determination of internal force. Internal forces आपने पहले भी calculate की होंगी mechanics में. We are just going through those topics quickly. कोई चीज आपको नहीं समझ आती, you can ask me.
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। Can you hear me now? या मैम। Okay. Uh, what we were talking about, we need to calculate the internal force, resultant internal force at point C of the given beam. आपको इस वक्त white board नजर आ रहा है? The first step is to pass a section through point C. आपने SFDs और BMDs ड्रॉ की होंगी मैकेनिक्स में. हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? We need to cut the section, we need to pass the section through the points under question. So our point is point C. We are going to pass a section line through point C. Resultantly, we will be having two parts, part A, C, and part C, B. Now, for our analysis purpose, we don't need to find out the reactions. The problem is we need to just find out the internal force. We have to decide whether we need to calculate the forces for AC segment or BC segment. AC और BC segment में से किसी एक segment पे हमने internal forces calculate करनी है. Because we always said कि हमारा system equilibrium में है और equilibrium में उसको क्या चीज स्टेबल करिए, क्या इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं? रिएक्टिव फोर्सेस. तो रिएक्शन विल बी इक्विवेलेंट टू द अप्लाइड लोडिंग. इसलिए आप कोई भी एक सेगमेंट इसमें सॉल्व कर सकते हैं. सो वी कैन ईदर ऑप्ट AC और वी कैन ऑप्ट BC. कोई एक हम इसमें से ऑप्ट कर सकते हैं. आसानी इसमें क्या है? इफ आई गो विद सेक्शन BC, I don't need to find out the reactive forces. मुझे reactive forces की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. और अगर मैं AC segment की बात करूं तो I need to find out all of these reactive forces first and then I will be solving for the internal loading. ठीक है. जो internal force है, हमने हमेशा से ये पढ़ा है, every action has an equal and opposite reaction. तो हम इसी चीज को सामने रखते हुए either we will opt segment AC और BC. इनमें से किसी एक सेगमेंट पे हमने काम करना है. So let's start with segment BC. तो हमारे एनालिसिस की अगर स्टेप वाइज हम बात करें, if I recall the engineering mechanics, तो हम क्या करते थे? We used to pass this section through the point under question and then we draw the free body diagrams. Then we apply the equations of equilibrium. ठीक है. यही आपका स्टेप वाइज प्रोसीजर था. सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमने सेक्शन लाइन पास की. सेकंड स्टेप क्या था कि हमने उस सेक्शन को आइसोलेट कर दिया, उस मेंबर को आइसोलेट कर दिया एट सेक्शन लाइन और फ्री बॉडी डायग्राम्स बना दी. फिर उसके बाद क्या था कि उन फ्री बॉडी डायग्राम्स पे, जिस डायग्राम पे हम काम करना चाह रहे हैं, उस पे इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करने. तो हमें वही स्टेप्स फॉलो करने, हम सेम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे और यहाँ पे अपना प्रॉब्लम सॉल्व करें. स्टार्टिंग विद द सेक्शन लाइन, हमने एक C पॉइंट से सेक्शन लाइन को पास किया. नाउ आई एम आइसोलेटिंग मेंबर CB. दिस इज माय सेगमेंट BC. ठीक है. ये क्लियर है कि हम BC सेगमेंट को क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि हम रिएक्शंस को अवॉइड कर सकें या उनको ओमिट कर सकें. उनके बगैर, रिएक्शंस के बगैर हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें. द प्रॉब्लम इज टू फाइंड आउट द इंटरनल फोर्सेस.
Okay, this is a gradually varying load. ठीक है, GVL हमने इसको कहा था, या triangular load. तो triangular load means throughout the length of the beam, it is gradually varying, it is uniformly varying. Okay, from 270 Newton per meter at point A to 0 at point B. ठीक है, जो इसकी वेरिएशन है A point पे, this is 270 Newton per meter and it is varying to 0 at point B. ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है. Now we are cutting the section at point C. C point पे हमें नहीं पता कि इस exactly C point पे जो GVL है या जो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी. तो सो फर्स्ट थिंग we need to calculate is the intensity of uniformly varying load at point C. Let's call it W naught. Okay, हम इसको W naught कॉल कर लेते हैं, हमें इसकी इंटेंसिटी नहीं पता. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे. To solve for the intensity of load, if I consider what one triangle as shown here and other triangle, the full triangle of the load, this is 270 Newton per meter. ये आप लोगों ने शायद इससे पहले भी प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे. And this is acting at 9. Now I have two triangles, one of dimension 6 meter and W naught and second of dimension 9 meter and 270 Newton meter. If I compare these two triangles, both are right angle triangles. अगर हम इसको compare कर लें तो हमारे पास जो W naught है, it will be solved. So W naught divided by 6, it is numerically equivalent to 270 divided by 9. So from here you can find out the magnitude of W naught, and W naught is the intensity of UVL at point C. This is 180 Newton per meter. If you don't understand anything, you may raise your hand. Okay, मैं उस वक्त आपको allow कर दूंगी. You may ask the question. तो अभी हमने W naught, that is the intensity of UVL at point C. We have calculated that intensity. Now let's draw the free body diagram. So the first step is to pass the section through the beam. Second step is to draw the free body diagram. So its free body diagram will be a straight line showing the beam or outline of the beam, internal shear, internal normal force and internal moment. देखिए यही तीन चीजें हमारे पास आती हैं. कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में मींस 3 forces will be acting on the body: normal force, shear force and the moment. And the given load, that is UVL of intensity 180 Newton per meter. Okay. We also know that the UVL or any distributed load, its resultant is equal to the area under the load diagram. So we can find out its resultant over here, and its magnitude will be half into base into height.
So this is 540 Newton. This is the free body diagram. On free body diagram, we also need to show the dimensions. So we are going to mark it over here. This is 6 meter. This is point C and this is point B. So the first step was to cut the section, second step was to draw the free body diagram, and third step will be the equations of equilibrium. So third step is equation of equilibrium. If you recall how many equations of equilibrium were applicable to coplanar force system, there were 3 equations of equilibrium. Summation of all forces in x direction is equal to 0. Summation of all forces in y direction is equal to 0. And summation of all moments to be 0. So we will use all of these equations to find out the internal loadings. So let's begin with summation of forces in x direction. This is equal to 0, assuming all rightward acting forces as positive. So we have one force N in x direction and no other force, so this is equal to 0. Then we will apply the second equation of equilibrium, that is summation of all forces in y direction is equal to 0, assuming all upward forces as positive. We have one upward force V, one downward force 540, and this is equal to net effect will be 0. So V will be equal to 540 Newton. Last equation of equilibrium will be applied over here. Last equation is summation of all moments to be 0, considering all counterclockwise moments as positive. So we have one counterclockwise moment as the internal moment. This will be positive, and next moment will be 540, that is the intensity of the load, multiplied with its distance from C. So this distance is 1/3 of 6, that is 2 meters. So multiplied with 2 meter is equal to 0. So this is 1080 Newton meter. You can redraw the diagram showing the forces at point C. So the internal forces are shear, that is 540 Newton, and moment, that is 1080 Newton meter.
So these are internal forces acting at point C of the beam. Is there any question? You may raise your hands, please. Muhammad Ashar. मोहम्मद अशर आतिफ राना, बेटा आपका कोई क्वेश्चन है? यस मैम। जी प्लीज। मैम मुझे पूछना है, ये जो 540 न्यूटन है ये शेयर फोर्स है? हाँ जी शेयर फोर्स है। ओके ओके श्योर मैम। शेयर फोर्स इज फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द सेक्शन, तो ये पैरेलल एक्ट कर रही है इसलिए इसको शेयर हम कहेंगे। एनी अदर क्वेश्चन? Okay, let's solve this problem for internal loading. You have to determine the resultant internal loadings acting on the cross section at point C of the machine shaft shown in the figure. ये machine shaft कहने, beam कहने, same behavior is reflected here as of the beam. आपके पास एक beam जिस तरह roller support और hinge support के साथ होती है, same is happening here. आपके पास एक overhanging beam है, loading is being applied as shown. आपने internal loads calculate करने. So the first step will be we have to pass this section through the beam at point C. C point पे हमने क्योंकि forces calculate करनी है तो C point से हम section pass करेंगे. And then we will draw the free body diagram. Free body diagram को draw करने के बाद we will apply the equations of equilibrium and solve for the internal loadings. So this is the beam and we have to find out the determine the internal loadings at point. मैम व्हाइट बोर्ड नहीं शो हो रहा। मैं क्या कहती हूँ? अभी शो हो रहा है? यस मैम। ओके, वी विल रिपीट द सेम स्टेप्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से जो सी पॉइंट है वहां से हम एक सेक्शन पास कर देंगे. सो वी विल पास अ सेक्शन थ्रू पॉइंट सी. वी विल आइसोलेट आवर बॉडी ए सी सेगमेंट एंड सी डी सेगमेंट. हम इस जो लास्ट पॉइंट है उसको हम डी के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं. दिस इज पॉइंट डी. Okay, now as we have passed this section AC segment or CD section, हम कोई भी एक सेगमेंट पे अपना काम स्टार्ट कर देंगे. If we draw AC segment or CD segment, in both cases we need to find out the reactions. दोनों केसेस में रिएक्टिव फोर्सेस आपको चाहिए होंगे. रिएक्शन के बगैर आप काम नहीं कर सकते. So, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी बीम के लिए रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे. क्विकली अगर मुझे आप लोगों में से कोई भी रिएक्शंस कैलकुलेट कर दे और मुझे वैल्यूज बता दें कि ए पॉइंट पे क्या रिएक्शन होगा और बी पॉइंट पे क्या रिएक्शन होगा. मेरे ख्याल से रिएक्शंस आप सबको कैलकुलेट करने आते हैं. जस्ट सॉल्व फॉर द रिएक्शन और मुझे वैल्यूज बता दें ए और बी पॉइंट पे रिएक्टिव फोर्सेस क्या है.
आंसर्स कैलकुलेट करने, और जिसका भी आंसर पहले आ जाते हैं मुझे चैट बॉक्स में काइंडली बता दीजिएगा।
जी, any answers? मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया. Okay, this is reaction A. Why we have simply applied the equation of equilibrium M summation of moments is equal to 0 about B point. B point के about जब हमने moment calculate किया तो हमारे पास reaction AY की value minus 18.75. We assume the reaction is acting upward, but the answer is negative 18.75. Means the reactive force is acting downward. If we are done with AY, तो हम AC सेगमेंट को आइसोलेट करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. द प्रॉब्लम वाज टू डिटरमिन द इंटरनल लोडिंग. ओके, तो हमें BY कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है इफ वी आर ऑप्टिंग टू सॉल्व द सेगमेंट AC. AC सेगमेंट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें जस्ट वी नीड AY रिएक्शन एट पॉइंट A. So now we are going to isolate the member. We will cut the section passing through C. The free body diagram in our case will become (18.75 Newton is the reaction acting downward. This is point A and this is point C. And the applied loading up to point C. The distance from A to C will also be shown over here. This is 0.2 meter and 0.05 meter. Load is 800 Newton per meter. Now we have to, this is the free body diagram of the member with respect to reactive forces. Now we also have to draw or show the internal loadings. This is the normal force. This is the shear force and the bending moment. We will assume some directions for all of these internal loadings, normal force, shear force and bending moment. We will assume that we will give some directions to this. If the answer comes positive, हमारी assumptions ठीक होंगी और अगर answer negative आ जाता है, we will have to change the direction of the assumed or assumed direction of the internal loadings. अभी हमने V, N और M calculate करना है. Free body diagram is done. Second step, that is the free body diagram has been plotted. Now we will move to the third step. Third step is the application of or the calculation of internal forces, application of equations of equilibrium. So we will go to the equations of equilibrium. So the first equation of equilibrium that we can apply over here is summation of Fx is equal to 0. We don't have any load in the x direction, so the normal force will be 0. The second equation of equilibrium is summation of all forces in y direction is equal to 0, assuming all upward forces as positive.
Now we have reactive force downward. So minus 18.75 Newton minus 800 multiplied with 0.05 40 Newton and an assumed upward shear force. So V comes out from here 18.75 plus 4. Sorry, 40, not 4, 40. So this is 58.75. Answer is positive. That means the assumed direction of the shear force is okay. Shear force is acting upward. The third equation of equilibrium will be used. That is summation of all moments will be 0. We are going to calculate the moment at the internal point, at the point at through which we have passed the section. तो हमने C point से पास किया था section, C point के about ही हम moment calculate करेंगे. Assuming all counterclockwise moments as positive. So negative MC, that is the assumed moment, plus 40, that is 800 multiplied by 0.05 multiplied with 0.025, that is the centroidal distance of load with respect to C, plus 18.75 multiplied with 0.2 plus 0.05, this is 0.25, and its net effect will be 0. So MC will be calculated and it is equal to 5.69 Newton meter. The internal forces are upward V, this is 58.75 Newton, and clockwise moment, this is 5.69 Newton meter. Clear? Any question? मैम ये जो डायरेक्शंस हैं शियर और इसकी, तो ये लेफ्ट और राइट पे दोनों में कोई भी अज्यूम कर सकते हैं या जो स्टैंडर्ड है वही लेनी होती है? नहीं, हम अज्यूम करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड ये है कि आप
अगर अपने लिए मतलब आप कोई एक रूल फिक्स करना चाहते हैं तो यू कैन फिक्स इट। ऑल राइटवर्ड फोर्सेस आर पॉजिटिव, तो आप तमाम फोर्सेस को पहले राइटवर्ड अज्यूम कर लें। कुछ चीजें हमारी जजमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, क्योंकि अब आप क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से तो बाहर आ गए ना, अब आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी इंप्रूव हुई होगी। अब आप ये भी कर सकते हैं कि आप गिवन लोडिंग को सामने रखते हुए जो आपकी अजम्पशन है वो जजमेंट हो, कि आप जज कर लें कि लोड डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो इंटरनल फोर्स अपवर्ड होगी, या लोड राइटवर्ड एक्ट कर रहा है तो इंटरनल फोर्स लेफ्टवर्ड होगी। ये आपकी जजमेंट है। आप इस तरह भी कर सकते हैं। दूसरा, आप कोई एक स्टैंडर्ड बना लें कि मैंने हमेशा इंटरनल फोर्स को राइटवर्ड ही लेना है, या मैंने हमेशा इंटरनल फोर्स को अपवर्ड ही कंसिडर करना है। अगर आप इस तरह चलना चाहते हैं आप इस तरह चल सकते हैं। एंड में क्या होगा, इफ द आंसर्स कम्स नेगेटिव मींस कि आपकी जो अजम्पशन है वो रिवर्स हो जाएगी। तो इससे हमें फायदा क्या होता है कि हमने अगर कोई स्टैंडर्ड बनाया हुआ है ना, तो हमने हमेशा उसी को यूज करना है। एंड में हमने आंसर्स को देख लेना है पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव है तो ठीक है, नहीं तो हम अपने साइंस को चेंज कर देंगे। साइन चेंज करने का मतलब क्या है, क्योंकि अभी तक आप सिर्फ इंटरनल फोर्स को कैलकुलेट कर रहे थे, उसके इफेक्ट्स को नहीं देख रहे थे। अब हमने इफेक्ट्स को देखना है। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, अभी हमने क्या कहा है कि हमारी जो शेयर है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इट इज गोइंग टू स्लाइड द मेंबर अप। आपका जो राइट हैंड सेगमेंट है वो अपवर्ड जा रहा होगा और लेफ्ट हैंड सेगमेंट डाउनवर्ड आ रहा होगा। अब उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ हमने जाना है। ठीक है, अब जैसा मोमेंट है, दिस इज क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज मोमेंट में कॉनकेव डाउनवर्ड वाली सिचुएशन आती है। खैर ये अभी आपको शायद ना समझ आए, हम बेंडिंग स्ट्रेसेस जिस वक्त पढ़ेंगे उस वक्त ये ज्यादा बेहतर समझ आएगा। तो अब हम क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की तरफ जा रहे हैं, तो अब साइंस को चेंज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके आंसर्स नेगेटिव आ जाते हैं तो आपने अपनी फोर्सेस की डायरेक्शंस को चेंज कर देना है। लेकिन अजम्पशन आप कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड करना चाहते हैं स्टैंडर्ड करने, खुद अज्यूम करना चाहते हैं खुद अज्यूम करने, जजमेंट करना चाहते हैं जजमेंट करने। तो वो आपके आंसर्स खुद आपको बता देंगे कि आपकी अजम्पशन ठीक है या नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, अभी मैं आपको इंटरनल फोर्सेस बता रही हूँ कि इंटरनल फोर्सेस आपने किस तरह से कैलकुलेट करनी है। ये आपने पहले भी काम किया। ठीक है, आप इंटरनल फोर्स से, क्योंकि हमने स्ट्रेस की तरफ जाना है, हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमने स्ट्रेस को कैलकुलेट करना है। तो अब हम स्ट्रेस को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इंटरनल फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे। मींस कि आपके जो बेसिक स्टेप्स हैं दे विल रिमेन द सेम। पासिंग द सेक्शन थ्रू द बीम, पासिंग द सेक्शन थ्रू द स्ट्रक्चरल मेंबर, देन ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम। After free body diagram, you have to apply the equations of equilibrium, determine the internal forces. ये आपके वही steps हैं जो SFDs और BMGs में आपने यूज किए थे। Now, an additional step that we are going to add here, or another thing that we are going to do, is to find out the stress. Internal force की वजह से जो member में stress produce हो रही है, this is the new thing. ये आप कहने की एडिशन है आपके प्रीवियस सॉल्यूशंस के अंदर। प्रीवियस जो आपने कैलकुलेशंस की उनमें एक एडिशन है। सो लेट्स बिगिन विद द स्ट्रेस प्रॉब्लम। सबसे आसान प्रॉब्लम मैं अभी स्टार्ट करवा रही हूँ, बहुत आसान है। अ कंपोजिट बार, कैन यू सी द स्क्रीन? आपको स्टेटमेंट नजर आ रही है? यस मैम। Okay, this is a case of a composite bar. Means this is a bar made up of different materials and of different cross sections. Different materials हैं जिनके साथ उन्होंने एक combined bar बनाई है. So this is a composite bar consisting an aluminum section rigidly fastened between the bronze and a steel section. ठीक है, एक aluminium section है and it is fastened between the bronze and the steel section. Axial loads are applied at the positions indicated. अगर आप नोट करें तो all of the axial loads are passing through the centroidal axis of the body, from bronze to aluminum and to steel. जो centroidal axis बन रहा है, जो longitudinal axis बन रहा है, उस longitudinal axis से तमाम loads pass हो रहे हैं. Means you can directly apply the equation of sigma, that is sigma is equal to P over A, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, सिंपल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला था. So axial loads are applied at the positions indicated. Determine the stress in each
section. Okay, you have to determine the stress in each section. अभी भी हमारा जो स्टेप वाइज प्रोसीजर की हम बात करें तो वही होगा जो इससे पहले प्रॉब्लम्स में हमने किया कि हम क्या करते थे, फ्री बॉडी डायग्राम सेक्शंस पास करते थे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते थे, इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते थे. सेम थिंग विल बी डन हियर. हम वही सारा काम करेंगे. Have to determine the stress in each. So we will start with one section and then we will proceed to the second and then to the third. हम स्टेप वाइज चलेंगे. हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट और दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट की तरफ मूव करेंगे. आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए. दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल. आपका पूरा जो सिस्टम है, जो फोर्सेस हैं, वो इक्विलिब्रियम में होंगी, तभी हम अपने सिस्टम को सॉल्व कर सकेंगे, इक्वेशंस अप्लाई कर सकेंगे. So we will start with one end. Means if I am starting from bronze section, so we will start from the bronze section, then we will go to the aluminum section and then we will go to the steel section. So one by one हम इन तमाम sections में से या इन तमाम materials में से section lines को pass कर देंगे. Okay, so first section that we are considering is the bronze section. So let's start with bronze. What will be the free body diagram for bronze if we pass this section and cut it? This is the free body diagram for bronze, having the internal applied load as 4,000 pounds. And we will have some internal force correspondingly. This internal force, because this is acting perpendicular to this plane, this section, so we will call it as normal force. And this normal force is now referred to as PBR, that is load in internal load in bronze section. If we apply the equation of equilibrium, only one equation is applicable, that is summation of all forces in x direction is equal to 0. Ma'am,
आप लोगों को आवाज आ रही है? सॉरी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था सिस्टम। कैन यू हियर मी? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। ओके, हाँ So मैम, we- बट अभी हमारी इंजीनियरिंग एस्टिमेशन एंड ड्राइंग कंस्ट्रक्शन की क्लास स्टार्ट हो गई है। नहीं, उनको पता नहीं था आपकी टाइम का क्लास में। मैम वो 2 o'clock को स्टार्ट होनी थी। आई थिंक ये 1 hour की क्लास थी। हमारा तो शेड्यूल्ड था बच्चे। मैम वो सीआर नहीं बताया था कुछ देर पहले। हमारी तो क्लास शेड्यूल थी ना, 2 hours की क्लास, यस और मैम। एज पर टाइम टेबल थी। मैम जो सेक्शन डी की है, सी की नहीं है। नहीं तो मैंने तो बच्चे दोनों को इकट्ठा पढ़ाना है ना। कौन है टीचर, कौन है आपके? आप तो आपके कोर्स इंस्ट्रक्टर कौन है कंस्ट्रक्शन मैम एंड सर प्लानिंग? काशिफ रियाज। आप काइंडली उनसे अगर आधे घंटे का टाइम ले लो प्लीज। श्योर मैम। थैंक यू। Okay, we were calculating the internal stresses, और internal stress को calculate करने के लिए first step is to find out the internal force. So we will apply the equation of equilibrium, that is summation of all forces in x direction is equal to 0, assuming all rightward forces as positive. तो जो आपके पास internal force है, this is PPR, and the applied force is 4,000 pound. So PBR becomes 4,000 pound. We assumed the direction as rightward. Force is acting rightward. मैम व्हाइट बोर्ड नहीं शो हो रहा। Okay. अभी शो हो रहा है? यस मैम। Okay, we simply cut the section, draw the free body diagram, apply the equation of equilibrium. तो आपके पास जो internal force है, applied force leftward act कर रही थी in the negative x direction, और जो internal force है, we assume कि ये rightward act कर रही है और in positive x direction act कर रही है। तो जो आपके पास इंटरनल फोर्स इस इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से आई, दिस इज पीबीआर इज इक्वल टू 4,000 पाउंड। आंसर इज पॉजिटिव, मींस इंटरनल फोर्स की जो हमने डायरेक्शन अज्यूम की थी वो ठीक थी। अच्छा, अब यहाँ से एक और चीज इंपॉर्टेंट आप अपने पास नोट कर लो। अब आपके पास, क्योंकि मैंने भी आपको पहले कहा था, अब इंटरनल फोर्स की डायरेक्शंस पता होना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करेंगी। ये सिर्फ राइटवर्ड एक्ट नहीं कर रही, दिस इज बेसिकली प्रोड्यूसिंग टेंशन इन द बॉडी। ठीक है, अब आपकी जो भी फोर्स किसी भी मेंबर के अवे, if a force is acting away from the member, means this is producing a tensile effect. So you are going to write in brackets with this force as T or C. This is tension. If a force is acting away from the member, it is trying to pull the member. Pulling effect is referred to as tension in the body. तो अब आपके पास ये टेंसाइल फोर्स है, मीन्स कि अब जो आप स्ट्रेस कैलकुलेट करोगे वो टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगी। Okay, so this T in brackets is necessary to be written over here. इसको टेंसाइल या कंप्रेसिव कहना जरूरी है। So first member is done. For the second material, now we are going to pass another section from the aluminum bar, and we will start from the first segment. ठीक है, अब इसकी हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। So second segment is aluminum. There are two forces acting on it, 4,000
pound and 9,000 pound. Now we will assume the internal force over here. ये assumption again repeating, आप judge कर लें कि इस वक्त क्या force internal आ रही होगी या आप कोई एक direction assume कर लें. It's up to you. जिस तरह आपके लिए आसानी है. Now we will, this is a normal force and we will call it as PAL to refer to as internal force in aluminum section. We will apply the equation of equilibrium over here. Summation of all forces in x direction is equal to 0, assuming all rightward forces as positive. So this is negative 4,000 plus 9,000 minus PAL is equal to 0. So PAL, that is aluminum force, internal force in aluminum section, and this comes out 5,000 pound. If answer is positive, means your assumed direction is correct. If answer is negative, means your assumed direction has to be changed. अभी हमारे पास answer positive आ रहा है, means कि जो हमने assume की थी अपनी direction वो ठीक है. और हमने क्या assume किया था? That force is acting into the body is trying to push the body. ठीक है, एक ये push effect आपके पास body में नजर आ रहा है. So push is referred to as compression. So we will write here C. So we are done with the two members. The last member is steel. We will pass in other section over here. और अब इस section से आप either you can come from this side or you can come from the left side. तो जहां से भी आप start करना चाहें, आसानी क्या है कि हम इसको right side से अगर start कर लें, then we can simply draw this member subjected to 7,000 pound load, and the internal force will be PST. फिर अगर आप equation of equilibrium apply करेंगे, summation of all forces in x direction is equal to 0, assuming all rightward forces as positive. So PST comes out 7,000 pounds. The assumed direction of the force is inward, or it's trying to push the member, means this is compressive force. So you are going to write C with PST. C refers to compressive force. Now we are done with the calculation of internal forces. But mainly we need to determine the internal stress in each section. So the second step is to find out the stresses. So first of all, we will write our results. P BR 4,000 pounds, and this is tensile force. PAL is 5,000 pound, and this is compressive. PST is 7,000 pound, and this is also compressive. So we have internal forces. Also from the given figure, because the areas were also given over here. ये हमारे पास areas भी given.
So the next step is to find out the stresses. So first stress will be calculated in bronze section, and the formula will be P divided by area, load divided by area for the bronze section. Load for the bronze section is 4,000 pounds and area for the bronze section is 1.2 inch square. So this is the stress in member bronze or in material bronze. So this is 3,330 psi, pound per inch square. Similarly, we can find out the stresses in all other members. We need to write tension or compression. This is tensile stress in bronze bar. Then we will calculate the stress in aluminum bar and then for the steel bar. So sigma AL, that is aluminum stress, is 5,000 pounds divided by 1.8, that is the cross-sectional area of the aluminum. This is 2,780 psi. And stress in steel is 7,000 pounds divided by 1.6 inch square, and this is equal to 4,380 psi. You need to write tension or compression, whether both of the stresses in aluminum and steel are compressive. The next problem is the block of weight W hangs from the pin at A. The bars A, B, and AC are pinned to the support at B and C. This is the situation. We have a weight W hanging from point A, and there are two rods or two bars carrying this weight AB and AC. दोनों AB और AC members के लिए जो angle of inclination है, that is given. So the areas are 800 mm square and 400 mm square for AB and AC respectively. AB और AC segment के लिए जो cross sectional areas हैं, they are also mentioned. So neglecting the weight of the bars, determine the maximum safe value of W if the stress in AB is limited to 110 megapascal and that in AC to 120 megapascal. Now this is reverse calculation. You don't need to find out the stresses in the member. You have to find out the value of weight that can be carried out by the members AB and AC if the stress limits are given. आपको स्ट्रेस लिमिट्स बता दी गई हैं ए बी सेगमेंट की और ए सी सेगमेंट की कि इससे ज्यादा आप उसके ऊपर लोड अप्लाई नहीं कर सकते. ये उसकी स्ट्रेंथ है. दिस इज द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द मेंबर.
So you have cross-sectional area for AC segment. We have AC segment and AB segment. AC segment के लिए जो cross sectional area that is given 400 mm square and area for AB segment is 800 mm square. Also their strengths or load carrying capacities are given. AC segment has the carrying capacity of 120 megapascal and AB has the load carrying capacity of 110 megapascal. This is what we are given with. We need to find out the value of weight. How much weight can be easily and safely applied to the structure without the failure. Means आपकी जो strength है, जो load carrying capacities है, उसके according आपने weight calculate करना. So the first step will be to draw the free body diagram. So let's try to draw a free body diagram. Free body diagram is a sketch of an isolated member carrying all of the applied loading and of the unknown forces. Known and unknown forces की जो diagram है उसको हम free body diagram कहते हैं. So this is the AC segment. We will call the load coming in AC segment as PAC, that is the internal force in the member AC, and the internal force in member AB, and the unknown force is W. We are also given with these angles. This is 60 degrees and this is 40 degrees. This is the free body diagram. So how many equations of equilibrium we can apply on this system? This is a concurrent force system. We can apply only two equations of equilibrium. Summation of all forces in x direction is equal to 0, considering all rightward forces as positive, and summation of all forces in y direction is equal to 0, considering all upward forces as positive. Moment equation is applying here. This is a concurrent force system. So from here, we can resolve the forces PAC and PAB into the components. X component of PAC will be PAC cos of 60 degree and PAC sine of 60 degrees. We have two components for AC segment, and similarly we have two components for AB segment. So we are going to write PAC cos of 60 degree, that is the X component of AC, negative PAB cos of 40 degrees, and no other force is acting in X direction, so the net result will be 0. Similarly, we will write the second equation. This is Y direction, forces in Y direction. So this is PAC sine of 60 degrees. This is acting upward, plus PAB
AB sine of 40 degrees. This is also acting upward, and W that is acting down. So if you solve these two equations simultaneously, you can get the result of as of PAB is equal to 0.508 W, and second equation becomes PAC is equal to 0.778 W. Means internal forces are coming in terms of W. PAB in terms of W and PAC in terms of W. Now we need to calculate the value of this W. How much weight can be safely applied to the assembly? इस assembly पे आप कितना weight apply कर सकते हैं? So one by one we will solve for both stresses. The maximum safe load will then be calculated. So we know that sigma is equal to P over A. हमने एक equation अपनी drive कर ली थी. So we will use the same equation. We said that sigma is given by P divided by A, or you can say that P is equal to sigma into A. Because we are given with the values of sigma as well as of A, हमें एरिया भी पता है और हमें सिग्मा की वैल्यूज भी पता है, तो हम दोनों मेंबर्स के लिए वैल्यूज को पुट कर देंगे. हम एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसके बाद दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज PAB इज इक्वल टू 0.508 W. हमें वैल्यूज क्या पता है? B segment की, this is 800 mm square area and 110 megapascal is the stress. So let's write EB 0.508 W and replace the values of 110 megapascal. Megapascal means 10 raised to power 6 Newton per meter square, multiplied with 800 millimeter square means this is 10 raised to power minus 6 meter square. Okay, and this is equal to 0.508 W. From this equation, we can find out the value of W. It comes out 173 into 10 raised to power 3 Newton. Similarly, we will solve for the second equation, that is PAC is equal to 0.778. So PAC is 0.778 times W. Sigma into A for AC segment is equal to 100, and sigma was 120 megapascal, so 120 into 10 raised to power 6 Newton per meter square, multiplied with cross-sectional area, that is 400 millimeter square, so 400 into 10 raised to power minus 6 meter square, and this is numerically equivalent to 0.778 times W. From this equation, W can be calculated and it comes out 61.7 into 10 raised to power 3 Newton. So we have come up with two values of weight. One equation states that weight can be 173 into 10 raised to power 3 Newton, and the second states that the W can be 61.7 into 10 raised to power 3 Newton. From these two values of weight, we have to apply the least amount of load so that both members can carry the load. If we apply 173, it can be safe for the member AB, but
AC member will fail because its load carrying capacity is less. So the least among these two values will be safely applied to the structure. So the result in our case becomes the safe, or you may say the safe value of load. You can state this, that the safe value of load slash weight is 61.7 into 10 raised to power 3 Newton, or in other words 61.7 kilonewton. ये सेफ वैल्यू है. अगर आप ज्यादा लोड अप्लाई करोगे तो ए बी मेंबर तो सेफ रहेगा बिकॉज उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी थी, लेकिन ए सी मेंबर फेल हो जाएगा. Is there any question? Is there any question, students? No, ma'am. Okay, यहीं पर हम आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं. We have simply calculated the stresses using the formula sigma is equal to P over A. आपने नेक्स्ट वीक के लिए मैं आपको एक दो प्रॉब्लम्स अपलोड कर दूंगी आज. इनको सॉल्व करना है, इनकी बेसिस पे मतलब स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करना है, इंटरनल लोड्स कैलकुलेट करेंगे, वही स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे. पासिंग द सेक्शन थ्रू द मेंबर, drawing the free body diagram, calculating the internal forces, and then calculating the internal stresses. नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारी फिजिकल क्लास होगी, आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व करके अपने साथ लेकर आना. जिसके पास सोल्यूशन नहीं होगा और वो सॉल्व आपने रजिस्टर्स पे करना है. यू हैव टू मेक वन कंप्लीट सेपरेट रजिस्टर फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स. आप मुझे वो साइन करवाओगे नेक्स्ट लेक्चर में. ये प्रॉब्लम्स जो मैं भी अपलोड कर रही हूँ, इनको सॉल्व करके आपने लेकर आना है. Nobody will be allowed to attend my lecture without the calculator and the register. दो चीजें आपके पास होना मैंडेटरी है. अगर आपके पास नहीं है तो आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे. I am going to download the attendance. उसके बाद अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, you can leave. लेक्चर स्लाइड्स बेटा मैं अपलोड कर देती हूँ. No questions? Okay, the attendance is downloaded. If you want to leave, you may leave the class. And if there is any question, आप chat box में लिखें या मुझे email कर दें, या अगर पूछना चाहते हैं, just raise your hands. Otherwise, we may conclude and end the lecture. ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं और जो प्रॉब्लम्स आपको मैं दे रही हूँ आप सॉल्व करके लाइएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज मैम.